Hello everyone, my name is Nancy Gupta. Please subscribe to my channel Nancy Study Hub. So today we shall discuss chapter Motion in a Straight Line of class 11. So let's get started. with the topic Introduction to Motion in a Straight Line. When an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. So हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक समझने के पहले मोशन के बारे में समझना होगा कि मोशन का मीनिंग क्या होता है, राइट? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम तो उसको बोलते हैं मोशन. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सपोज एक बॉय है जिसका नाम है राहुल. वो उसका स्कूल ओवर होता है 2 PM पे, तो वो एकदम से भागा स्कूल से घर की तरफ एंड फिर वो अपने घर के पे पहुंचा 2:10 PM. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन. व्हाई? बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल एंड स्टॉप्ड एट होम. So obviously from 2 to 2:10 he changed its position with time. So this is an example of motion. Now in motion, two conditions must be satisfied. Change in position of an object and change must be with time. Note that motion in a straight line is also known as rectilinear motion. जो straight line motion linear motion होता था उसको हम rectilinear motion भी कहते हैं. Also, if Rahul moves along a straight path and covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to be uniform motion along a straight line. So you can see these examples, right? What are these examples of? These are examples of straight line motion, also known as linear motion, also known as rectilinear motion. So you can see in this example, an apple is falling from a tree, right? So it is following the law of gravity, due to which it falls down in a straight line towards the earth. Second example, pushing of box. This is again a rectilinear motion. March past by students. सबने no doubt किया होगा अपने school life में. So that is march past. And this is an example of straight line motion. That is rectilinear motion. Here you can see equal distance is covered in equal intervals of time by a ball, and this is an example of uniform motion. Now let's discuss about the frame of reference. Frame of reference पता है आपको क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, और रुकी हुई ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेन रुकी हुई है और बाहर की कार चल रही है, तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा कि योर ट्रेन इज मूविंग, ठीक है. और कई बार क्या होता है कि आप स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे, और वो ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? वो ट्रेन चल रही है. दैट इज ट्रेन इज इन मोशन. So in the first case which I discussed, train was in rest. It was at rest. और वो जो person था वो motion में था. तो train को भी लगेगा कि it is in motion. So it depends on the frame of reference. Generally what happens, we use rectangular coordinate system. We have x-axis and y-axis. So if the object moves only with respect to x-axis, अगर suppose for example this is x-axis, ठीक है, and this is y-axis. Okay, so this is x-axis. So this is x-axis and this is y-axis.
अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ इस डायरेक्शन में सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, देन इट इज सेड टू एग्जीक्यूट मोशन इन टू डायमेंशन। और अगर हम इसमें जेड एक्सिस भी मिला दें, ठीक है, अगर हम इसमें जेड एक्सिस भी मिला दें तो क्या होगा, तो और ऑब्जेक्ट इस तरफ भी अगर मूव कर रहा है तो इन दैट केस the object is said to be in motion in three dimensions. ठीक है, and their intersection, this intersection is reference point O. Okay, reference point is also represented as 0 0 0. Why 0 0 0? Because उस point पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा and z भी 0 होगा. So x, y, z coordinates describe the motion of object or the position of object with respect to its coordinate system. X, Y, Z, Cartesian coordinate system. What is the difference between distance and displacement? So what is distance and what is displacement? Now let's discuss with the scalar quantity and vector quantity. Distance क्या होता है? Scalar quantity. That is, it is just dependent on magnitude. सिर्फ magnitude dependent होता है, that is सिर्फ number पे. Whereas displacement जो होता है वो vector quantity होता है, that is magnitude plus direction, दोनों ही पे dependent होता है displacement. So that's why distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. You can then see in this picture, here there are two positions, A and B, right? तो यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल ऐसे इस तरह से zigzag पाथ में जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? ऑब्वियसली हम पूरा रोप रखेंगे और उसको फिर स्केल पे रख के देखेंगे कि ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी. पर अगर हम ए से बी के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object while traveling from A to B. So let's discuss it in short. What is the difference between distance and displacement? Okay, distance is the total length of the path moved by a body in a certain interval of time, whereas displacement is the shortest distance between initial and final position. Distance is a scalar quantity. We have already discussed scalar quantity means it has only magnitude, whereas displacement is a vector quantity, that is, it has both magnitude and direction. Distance, its magnitude depends on the path followed by the object. ठीक है, its magnitude depends on the path followed by the object, मतलब path dependent होता है, ठीक है. Whereas displacement सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, initial position and final position. It does not depend on the path followed by the object. It can be more than or equal to magnitude of the displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, क्या, डिस्टेंस. Whereas displacement can be less than or equal to distance of the object. Distance is always positive, whereas displacement can be both positive or negative. It is not necessary that distance will be zero if displacement is zero. जरूरी नहीं है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा. Whereas displacement, it is zero if distance is zero, but it can be zero even if distance is not zero. Let's discuss some important notes. The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. Both displacement and velocity, both are vector quantity. दोनों ही magnitude और direction dependent होता है. और distance and speed दोनों क्या है, scalar. Distance और speed सिर्फ magnitude dependent होता है. What is the difference between instantaneous speed and instantaneous velocity? ठीक है, so you can see in this picture instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed को हम average speed भी कह सकते हैं और instantaneous velocity को instantaneous velocity. तो
एवरेज स्पीड